guest today on the dais. Please, sir, Justice B.J. Kolse Patil ji, please, sir, join the stage. Sir. I would also like to call Mr. Sudhindra Kulkarni ji and Saeed Mirza ji on the stage, and Anand Vardhan ji, please join the dais. Well, let me give you a quick introduction of all of our guests today. आनंद जी, ऑथर ऑफ द बुक, भारतीय पत्रकारिता में एक जाना माना नाम है और देश की राजनीति पर रिपोर्टिंग करने का और गवर्नमेंट पॉलिसीज का विश्लेषण करने का इनका तजुर्बा रहा है। आनंद जी जनसत्ता के संपादक भी रहे हैं और अब द पब्लिक इंडिया नाम के डिजिटल न्यूज़ चैनल के फाउंडर और चीफ एडिटर हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वेलकम हिम। थैंक यू सर। Well, I'm also delighted to welcome our esteemed guests here today. Our chief guest today is retired Justice B.J. Kolse Patil ji, former Justice of the Bombay High Court. Many of you may not know this, but Mr. Patil had a humble past as a farm labourer, and from farm labourer to defence counsel and to public prosecutor to High Court judge, Mr. Kolse Patil has now dedicated himself to social activism. Our next guest is Mr. Saeed Mirza, noted screenwriter and filmmaker and national award winner. Mr. Mirza's movies such as Mohan Joshi Hazir Ho, Albert Pinto Ko Gussa Kyun Aata Hai, Salim Langre Pe Mat Ro, and Naseem ushered in new era of parallel films in Indian cinema. Please welcome him on the stage. I would also like to welcome Mr. Sudhindra Kulkarni ji. For those of us who have been covering politics, news, Sudhindra ji is a very known face, easily approachable persona as well. From journalism, politics and to corporate, Sudhindra ji has left his mark in every field. Though all of our guests come from very diverse background, but one thing they have in common, they have all witnessed the transformation of India firsthand. So first of all, please give a big round of applause for our guest. Now we will also have unveiling of the book. I would request our chief guest to please do the honor. Thank you so much. आगे बढ़ते हुए अब मैं सुधांशु मणि जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सुधांशु जी ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस के जनक हैं और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन के कंसल्टेंट रहे हैं। सुधांशु जी लेखक भी हैं और आप कृपया इस बुक के बारे में और आनंद जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ दिन पहले लखनऊ में कहीं आई वाज सिटिंग देयर, आई थिंक देयर वाज सम डिस्कशन ऑन द बुक। इन जनरल कुछ गांधी जी पे बात हो रही थी, तो एक साहब बोले कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। मैंने आनंद से आके बात की, मैंने कहा भाई गांधी जी पे बात करना क्या पॉलिटिक्स है? सो ही सेड, if you think like this and you have read the book, then I'll have you talk about me and the book in this function.
So this is the background. I have no knowledge of politics as such, but I am here because of that simple incident where I found it very strange. So after a very staid, protocol-driven feudal organization like Indian Railways, which I served all my life, after retirement, so we are batchmates. We were together in intermediate in Colvin Talukdas College in Lucknow. So I landed in Lucknow to settle there. Very soon I learned that Anand Vardhan is running a YouTube channel, what he calls a views channel. I mean, I didn't know the difference between a news channel and a views channel and so on. And so इनके ऑफिस में अड्डा होने लगा शुरू में, चाय वाय पीने इनके यहाँ पहुँच जाते थे, बिकॉज मेरा अपना कोई ऑफिस तो अब रहा नहीं। वहाँ इन्होंने इनके बारे में ज़्यादा क्या बताना है, जब किताब के बारे में आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। बस बहुत पापड़ बेले हैं इन्होंने ज़िंदगी में। सेल में इन्होंने नौकरी की एज एग्जीक्यूटिव, देन पॉलिटिक्स में आ गए, फिर कॉरपोरेट बिजनेस में रहे और बहुत कुछ किया इन्होंने। जब बहरहाल हम लोग 2018 में मिले तो ये इनका नया दौर उससे कुछ पहले ही शुरू हुआ था, एक आध साल पहले उससे। तो वी स्टार्टेड मीटिंग। सो बातों बातों में इन्होंने कहा कि भाई तुम घर बैठे तो कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास, व्हाई डोंट यू जॉइन मी इन डूइंग समथिंग। तो बातचीत के बाद तो 2 सेशन इनके चैनल पे मैंने शुरू किए। एक था सिर्फ शेर व शायरी पे, पब्लिक कैफ़े के नाम से, और एक था इन्होंने कहा भाई मेरा मेनली हिंदी चैनल है, लेकिन टू एनलार्ज द व्यूअरशिप इंग्लिश में तुम करंट अफेयर्स पे कुछ करो। तो एक वो स्ट्रेट ड्राइव नाम इन्होंने दिया एक प्रोग्राम में, वो शुरू किया मैंने। जो शेर व शायरी वाला प्रोग्राम था वो तो करने में बहुत मज़ा आता था मुझे, और कुछ गिने चुने लोगों को शायद सुनने में भी मज़ा आता था। 1000-2000 व्यूज़ उसके हो जाते थे। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो 1000-2000 व्यू तो होते थे, लेकिन चूंकि इनका व्यूज़ चैनल था तो इनके जो लाख व्यू होते थे उसके 5000 वो डाउन कर देता था। और जो अंग्रेज़ी में करंट अफेयर्स पे, सो कॉल्ड करंट अफेयर्स स्ट्रेट ड्राइव करता था मैं, तो वो उसमें भी ऐसे ही 1000-2000 3000 व्यू इनके साथ जब मैं कर लेता था महीने एक बार तो वो 10,000 हो जाते थे। जब अकेले करता था तो 2-3 हज़ार पे अटके रहते थे। तो एक बार ये ज्ञानेश जी अभी बाहर निकल रहे हैं, इनसे पूछा मैंने कि भाई ये क्या है यार, हाउ टू इम्प्रूव द व्यूज़। उसने कहा साहब आप ये जो दूरदर्शन लेवल का आप जो व्यूज़ बताते ये नहीं चलेगा, इसको आप व्यूज़ जो है दूरदर्शन वाले मोल्ड से निकलिए तभी कुछ होगा। तो खैर वो एज एक्सपेक्टेड धीरे धीरे वो रेगुलर प्रोग्राम बंद हो गया मेरा, मैंने बंद कर दिया बिकॉज नॉट गेटिंग दैट ट्रैक्शन। लेकिन और ये कह सकते हैं आपके कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरी कूचे से हम निकले। तो इतने बेआबरू नहीं हुए थे। इन्होंने टॉकेथॉन और सेशंस में ये अभी अभी बुलाते रहते हैं, और चाय पीने तो इनके ऑफिस जाते ही रहते हैं। और भी बहुत कुछ हम लोगों ने शुरू किया था इन दी एक जनरल एप्रिसिएशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एक अवध कॉन्क्लेव के नाम से वी हैड अ वेंचर वेयर वी called luminaries from all the fields, and for 2 days we had a wonderful conclave, which because of COVID we could not repeat, but we hopefully would soon do. तो ये तो ज़्यादा मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। इनके बारे में मैंने आपको छोटा मोटा परिचय तो दे दिया। तो जब बातचीत करते थे इनके साथ तो मैं भी एक फालतू टाइप की किताब मैं भी लिख रहा था उन दिनों अपनी, जिन्होंने बताया वो ट्रेन के बारे में, और कभी कुछ मेरी आइडिया थी कि गालिब पे किताब लिखी है लोगों ने कई हज़ार, और शेक्सपियर पे लिखी थी, दोनों को मिला के कुछ लिख दिया जाए तो कैसा रहे। उन दिनों ये किताब लिख रहे थे, ये वाली, और इसका टाइटल सुनते ही मैं उछल गया। मैंने कहा यार ये किताब तो बस टाइटल पे ही इतनी बिकेगी कि क्या कहा जाए। एंड देन एवरी टाइम वी यूज्ड टू मीट ही वुड डिस्कस अबाउट वन ऑफ द चैप्टर्स ऑफ द बुक। सो यू नो देयर आर 20 chapters you can say which
describe 20 events which shaped India, starting from assassination of Gandhiji, forming of the constitution, Indo-China war, then Bangladesh war, 71, emergency, Janta experiment, Indira Gandhi's assassination, Rajiv Gandhi's assassination, the Janta Dal experiment, and the Janta Dal experiment, and then the Narasimha Rao reforms, Pokhran II, Atal Bihari Vajpayee's time, then MNREGA and the UPA government, and of course the present dispensation. All that has been covered, but since he said you have read the book. Actually, I have not read the book. I have been a part of when the book was being written by him. And unlike my writing a book which I used to do, kabhi time mil gaya, baith gaya, computer pe likh gaya, our friend here used to wake up at 5 o'clock in the morning and as a discipline write 3-4 hours every day. And we would talk about it. So the incidents I just related, you all know them. But he had some interesting twist or an interesting fact about all of this, which he would ask me, do you know that? And even before he would ask the question, I knew I didn't know that. So I would say no, and then he would tell you what it was. Eye-opener. So I had that contribution. I told him right in the beginning, yaar, tumhari kitab to bahut chalegi, and it will be a very valuable book. So before I take more time, let me also tell you that in that association, I also learned what is true intrepid journalism, especially in today's environment. Because something happens today, and by evening Anand Vardhan has to come on his channel and talk about it with research, and I've seen him do it. So it's not just research, it's also the capability to speak the truth, and that's what I found he was able to do, and that's what you would find in the book, ladies and gentlemen. That is the greatest quality of this book, apart from the interesting twists and facts that you will discover while reading it. And before I end, you see, all of us have concerns today, or all of us have appreciation of things, or we try to run down things and so on. But he is one, if I can quote Faraz, कि शिकवा ज़ुल्मत शब्द से कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की एक क्षमा जलाते हैं. So he has lit, I would say, 20 lamps through these 20 chapters, and that's the job he's doing, and my hats off to him for doing this. And I'll not take more time, but as we go along in this, and when Anand speaks, you will again learn a lot of things about this book, which will make a compelling reading for you. Thank you very much. Thank you so much, Sudhanshu ji. I would now like to call upon retired Justice Vijay Kulse Patil ji. Please, sir, deliver your remarks. भाइयों और बहन, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इस किताब के विमोचन के लिए मुझे क्यों बुलाया, लेकिन मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं भी 80 साल का हूँ, तो वॉट एवर ही हैज रिटन आई एम विटनेस टू दैट. एंड मैंने उनको बोला कि आपने जो लिखा, शायद उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. वो क्लियर कट ही फॉलोड महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य में कहा था कि इतिहास क्या है, शब्दार्थ ऐसा हो गया.
कि ऐसा हो गया, यही सही इतिहास है, ये महात्मा गांधी ने लिखा, वही इन्होंने लिखा और उसका पालन किया है। सर आनंद जी, मैंने क्या किया कि जो मेरे संबंधी बातें थी वो पहले देखी, जहाँ की जस्टिस कृष्णायर, जस्टिस सावंत का रिपोर्ट था गुजरात राइट्स में, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड, हिज गैंग शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स एंड दे शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. I spoke to him, but then I saw Justice Sawant's name in one matter in Hazare, and he also correctly written it, no untoward. एक शब्द भी ऐसा नहीं है कि जिसको कोई कह सकता है. वो मैंने पेज देखा और जस्टिस सावंत was commissioning whatever charges Hazare have made against others, but Justice Sawant inducted Hazare also. हजारे को दोषी ठहराया और कहा कि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से ऐसे पैसे लेना गलत है. वो पैसे उठाए थे और कुछ उनका बर्थडे और सेलिब्रेट किया था. इसलिए मैं एक एक जब घटना पढ़ता गया तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया. मैं इतना वॉरेशियस रीडर भी नहीं, तो भी मैंने पढ़ा. फिर मैं गया गोधरा में. गोधरा में जो इन्होंने मनोहर जोशी स्पीकर बने, उसका जो वर्णन किया है, आई टेल यू, उन्होंने कहा कि तब तक पद की गरिमा थी, कुछ अलग गरिमा थी, जब तक मनोहर जोशी नहीं आए. नॉर्मली आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बदनाम हूँ कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता हूँ, मैं आरएसएस के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मैं सही बोलता हूँ. मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ. सुधीर जी सर्टिफिकेट देंगे मुझे, हम किसी के खिलाफ नहीं है. लेकिन आपने जो लिखा वहां, एक ब्राह्मण से अपेक्षा नहीं थी, वो लिख के आपने. फिर मैं पहले चैप्टर पे गया. मैं अभी वो दोहराना नहीं चाहता, इनको पढ़ने दो, इनको भी पढ़ना चाहिए. लेकिन मैं फिर पहले चैप्टर में गया और पहले चैप्टर ने आपने जो बोला कि इतने सालों से लड़कर ये स्वतंत्र मिला, इसको जहां कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन डाइवर्ट करने के बजाय महात्मा गांधी का एसोसिएट करके सब जो सपना था, कॉन्स्टिट्यूशन का सपना क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का सपना है कि एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी, सभी शोषणों से समाज को मुक्त करना, यही कॉन्स्टिट्यूशन का हेतु है. और ये होने नहीं देना था. जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध किया, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के बेनिफिट इनको कैसे न मिले, इसके लिए महात्मा गांधी एसोसिएशन. सर, उसमें भी मैंने देखा कि गांधी जी का सिर्फ भारत पाकिस्तान के लिए खून नहीं हुआ, उसके पहले उनके ऊपर 5-6 अटेम्प्ट हुए. पांचगनी में और भी कई अटेम्प्ट हुए, और वहां तो पाकिस्तान भारत का सवाल ही नहीं था. आप माफ करेंगे, लेकिन तिलक के बाद बहुजनों के हाथ में नेतृत्व देने का काम महात्मा गांधी ने किया, और वो महाराष्ट्रियन रूलिंग क्लास को पसंद नहीं आया. इसलिए उस जमाने से महात्मा गांधी से उनकी दुश्मनी थी. इतना ही नहीं, तो महात्मा गांधी को मारने का प्रयास करने वाला सेम ग्रुप है. और ये हमारे एक दोस्त है जगन फडणवीस, उन्होंने एक किताब लिखी थी महात्मा के आखिर, और उसमें उन्होंने लिखा था ये पाकिस्तान और भारत और ये 55 करोड़ वगैरह सब झूठ है. महात्मा गांधी उनके दुश्मन थे ही, इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन की भी उनको विरोध था. और आई कैन अंडरस्टैंड, हम भी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं गए क्योंकि मैं 42 में जन्मा हूँ और तब जा नहीं सकता था. और माय फादर वाज अ लेबरर हु कुड नॉट इवन गो टू आंदोलन. पर आंदोलन को रिटर्न विरोध किया 1942 में. मुखर्जी ने ब्रिटिशों को लिख के, हम आपके साथ हैं, हम आपको मदद करेंगे, इनका आंदोलन हम खत्म करेंगे, रिटर्न. तो ये महात्मा गांधी का
असोसिएशन इतना इनोसेंट नहीं है जो हम समझ सकते हैं। तो ये सब जो ट्रेडिशन आगे बढ़ने वाली थी, क्योंकि महात्मा गांधी की ताकत थी, वो पाकिस्तान को भी साथ ले सकते थे, बांग्लादेश को भी साथ ले सकते थे। और ये जो आज झगड़ा चल रहा है हिंदू मुस्लिम, उसको वो अलग अच्छा टर्न दे सकते थे, इसलिए गांधी गए। लेकिन उसमें जो आपने एक पैराग्राफ डाला है कि अंबेडकर और गांधी की आपने तुलना की है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इन्होंने कहा ये दोनों अपने अपने जगह पे ग्रेट पीपल है, बड़े लोग हैं ये, और एक नेशन ऑफ द फादर ऑफ द नेशन है और दूसरा फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बहुत सही वर्ड इस्तेमाल किए वर्ड्स। ऐसा मैं एक एक पढ़ता गया, मुझे मालूम नहीं समय कितना है, लेकिन मैं आप सबको विनती करूंगा कि ऐसा किताब आपको नहीं मिलेगा कभी पढ़ने के लिए। और फिर आपने जिक्र किया संजय गांधी का। हिटलर ने जितने लोग नहीं मारे, यानी क्या बोलते हैं उसको, नसबंदी नहीं करी। हिटलर ने कुछ कई 3-4 लाख लोग की नसबंदी करी थी, संजय गांधी ने 60 लाख लोगों की नसबंदी करी। और वाजपेयी भी कहते थे आओ मर्दो ना मर्द बनो। तो ये महात्मा गांधी के बारे में एक मैं भूल गया, इन्होंने सही कहा कि महात्मा गांधी ये मिसकोट करते हैं कि गांधी जी ने बोला था कांग्रेस खत्म करो। गांधी जी ने ऐसा नहीं बोला था। गांधी जी ने बोला था आरएसएस के तहत, उनके 2 विंग है, कार्यकर्ताओं की विंग है, आरएसएस है और जनसंघ था तब। तो गांधी जी का कहना था कांग्रेस में आंदोलनजीवी, आज के शब्द में ये अलग विंग होनी चाहिए और चुनावजीवी अलग विंग होनी चाहिए, ये गांधी जी ने कहा था। लेकिन वो मिसकोट किया जाता है। तो ये आपकी किताब से हमें मालूम हुआ। हम भी बोलते थे कि गांधी जी क्यों बोल रहे थे कांग्रेस खत्म करो, तो उन्होंने खत्म करने का नहीं कहा था। तो ऐसे कई किस्से हैं जो मैं आपको 1-2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे सब भाई लोग बोले। तो भी कुछ घटनाएं मुझे बोलना चाहिए कि पेज 17 या 18 पर आपने लिखा है गोखले और गांधी का संबंध। तो गोखले died in February. Gandhi came to India in January. What is the year? 15 15 साल 1915। तो गोखले और गांधी का बहुत कम संबंध आया, लेकिन उन्होंने कहा था सब देश घूमो। तो बिल्कुल हम हिस्ट्री पढ़ते, गोखले ही गांधी के गुरु थे। तीसरी बात ऐसी है कि मुझे वो किस्सा बहुत पसंद आया, बरकत अली एक मुस्लिम ऑफिसर, कि उस कांस्टेबल होगा कुछ होगा, वो बाबरी मस्जिद की रखवाली करते थे और एक दिन रात को रामलला की मूर्ति वहां बैठा दी। उस समय वो सोया था या डरा था? डरा होगा, सोया। दूसरे भी कांस्टेबल होंगे। तो खुद मुसलमान बोलता है कि एक बड़ा लाइट आया, हम सब चौकार देखते रहे और वहां रामलला की मूर्ति निकल आई। क्यों बोला? तो इसके लिए उन्होंने वर्णन किया। और वहां जो कलेक्टर था, उसकी पत्नी भी कोई आईएएस ऑफिसर थी, दोनों एमपी बने और वो नायर का ड्राइवर एमएलए बना। तो क्या रामलला की कमाल है ना। तो जिन्होंने ये कि अभी वही सिलसिला अभी चल रहा है। जो जज कमीशन कर रहा था शाह गुजरात में, वो अकेला घर में था, मर गया, किसी को मालूम नहीं। उनका होम मिनिस्टर था हिरेन पंड्या, मारा गया, किसी को मालूम नहीं। जस्टिस सावंत और कृष्णा आयर के सामने पंड्या ने डिपोजिशन दिया कि व्हाट रियली हैपन, और वो डरते डरते आ गए। रात को 3 बजे आ गए सावंत के सामने। तो उन्होंने पूछा भाई डरे लगते हो? तो हाँ सर, लेकिन मेरा कॉन्शियस कहता है कि आपके सामने सच बोलूं, इसलिए मैं आया हूँ। और 2-4 दिन में उनका जो हुआ वो जो हुआ देश के सामने है। तो ये जो आपने सही, जिसको बोलते हैं नब्ज पकड़ के जो लिखा है, अपने इंदिरा गांधी के बारे में भी लिखा है। और मैं अभी आपकी इजाजत चाहता हूं, लेकिन मैं सबको विनती करता हूं कि ऐसा बुक आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा।
और मैं कम पढ़ने में बहुत कम हूँ, तो भी मैंने ये सब किताब पढ़ के इतने पॉइंट्स लिख के रखे थे। इन्हें सुबह बोला मैंने कि मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन कोशिश करूँगा। ये बहुत अच्छे, इतने अच्छे किस्से हैं कि जो संविधान जब आया, छोड़ दो अभी, मैं आपके सबके लिए उनको भी बोलना है, इनको भी बोलना है। मैं आप सबको विनती करता हूँ कि ऐसी किताब शायद होने नहीं, क्योंकि वो ट्रू, इसको हम हमारा दुख क्या है? अम्बेडकर ने भी बोला है, जिस दिन हम सबको हमारी सही हिस्ट्री मालूम होगी तो देश में भूचाल आएगा, भूकंप होगा। तो यही काम इन्होंने किया है कि सही हिस्ट्री है, अपना खुद जोड़ा, थोड़ा जोड़ा है, लेकिन आपके ऊपर छोड़ा है, आप इन्फ्लुएंस निकालो। तो मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। आपके सामने मुझे इतने बड़े किताब के सामने बोलने के लिए मौका दिया, इनको आभारी हूँ। और देश के तरफ से मैं आभारी हूँ कि आज हम युवा पीढ़ी जो है 20 से 40 की, उनको क्या मालूम है क्या है देश में क्या हुआ, क्यों मारा गांधी को, क्यों मारा। अभी तो नथुराम गोडसे ही महात्मा हो गए। तो ये सब हिस्ट्री कौन बोलेगा, कौन समझाएगा? और कुछ किसकी ताकत है सही लिखने की? वो जिन्होंने लिखा है, मैं आप सबका आभारी हूँ, उनका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Next, I would like to call upon Mr. Saeed Mirza ji. Please share your views about it. नमस्कार, आदाब, श्री राम, जय श्री राम, good evening, Sat Sri Akal. I wish I could use all the greetings of our language, of our country, just to make a point. What a lovely land we live in. What a great country we live in. To greet you all in all the languages. I am thankful to Anand sir for inviting me to be on the dais for the launch of his book, Hey Ram to Jai Shree Ram. I would like to add that it's a long journey. कहाँ से गुजर गए, both as people and as a nation. What we have witnessed, what we have seen, what we have heard, what we've gathered. This book is so timely. But to me it's not new. Though I have not read this book, I am sure, but I'm absolutely sure I will enjoy reading it because it provides me with further insights of this journey, both personal and of yours, of research. So I'm so grateful to have this book as in my library. When I say I am not surprised by this book, from Hey Ram to Jai Shri Ram, I have been witness to almost, ever since I can remember, 8 or 9 years old, and I'm almost 80 now. 70 years of questioning both my father and the news that I would gather when he would read the papers to me about what was happening in our country. And ever since I can remember, there were riots. So it started off very slowly, but from the mid-50s onwards, all the way to 2022, there were riots. Some linguistic, some ethnic,
But basically, caste and communal rights, that was retained throughout. I am not surprised. I am not surprised at all. All I can say is, today we have reached a stage where the battle is so simple. It has to do with the Constitution that we all respect, and that's why we all here. What was the Constitution, which was created in 1950, around that time? It was a piece of paper that declared something very simple. If you cut all those pages up, very simple, it was saying that everybody in this country is equal, fundamentally. Equal rights, but justice, equality, and freedoms for all. That is what is meant. Now try to imagine us as a country. 1947, born out of communal rights, a patriarchal state, linguistic, ethnic, communal rights occurring. That's how we created, and we have this document which says everyone is equal and justice. It's poetry. You are demanding poetry from a land. You're demanding poetry from citizenry. You're declaring this to the people of India and to the world. This is what we are. This is what we hope to be. And that's your journey. It didn't go that way. We all know that. And today we are facing the consequences. Justice Kolse Patil is here. And I'll give you an example of a very simple thing which explains us today after what we have become. Fundamentally, let's take the judgment of the Supreme Court on the Babri Masjid stroke, Ayodhya stroke, mosque, temple stroke, disputed structure issue. What do the judges finally say today? That's in 2019. Kya kaha unhone? They said something very simple, that the demolition was illegal. Kaha unhone? In the judgment, demolition was illegal. The planting of those idols fake and manufactured. Yeah. No evidence of it being built over a temple. But most importantly, that piece of land represents the conscience of a people. And therefore, that piece of land should be given to the demolition squad. And that was called justice. And we all applauded. Wow, that is justice and that is law. What have we done in the process of it? We have demolished everything that is rational and that is just in one act. As Kolse Patil Sahab did say, we all know what happened to the judge who did that. Justice, he became a member of the Rajya Sabha. That's where he went. And that's why I've come here today to say, well done, Vardhan Sahab. Really well done. This is what the country deserves, to read and to understand. I do not know how many people are going to read this. I hope it is debated and talked about across this country, Hindi mein, Marathi mein, Gujarati mein, Telugu mein, Bengali mein, Malayalam mein. This is what is required of this book, so that younger people understand what we have actually become. Thank you so much. शुक्रिया सईद जी।
Next, I would like to call Mr. Sudhindra Kulkarni ji to deliver his remarks. Thank you. सबको नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद आनंद वर्धन जी for inviting me to participate in today's event. I'm happy for two more reasons. One, of course, that I'm sharing the dais with Justice Tulsi Patil ji. But meeting Saeed Akhtar Mirza Saab has given me enormous happiness, because when I was a student and a young journalist, he was an icon. He was a Bollywood icon for us. I still remember his film Albert Pinto Ko Gussa Kyun Aata Hai. I had the poster of that film pasted on my wall. Nukkad. You don't get to see serials like Nukkad on Indian television anymore. So thank you, Mirza Saab. Hey Ram to Jai Shree Ram. I must confess that I saw the book only today, and when you contacted me, I thought that this book is all about Hey Ram and Jai Shree Ram. That is the journey from assassination of Mahatma Gandhi to all that happened and it continues to happen in the name of Jai Shree Ram. But now I discover that it is much more. There are 20 chapters, and Anand Vardhan ji has really covered 20 dates that changed the course of India. So it's much more than just the Ayodhya dispute and Gandhiji's assassination. There are many more events that shaped India's history that have been researched and written about in this book. I'm not going to comment on all the 20 chapters since I haven't read, but I'll present my thoughts on just 5 of them. The first one, of course, is Hey Ram. Friends, in just 8 days from now, we're going to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav. It's not just an occasion for celebration, it's also an occasion for introspection, because it's not independence alone that marks the event of August 15, 1947. India was also partitioned. So there was celebration, but also a big tragedy. And the after effects of that tragedy are being felt even today. So we should never forget that our motherland was divided. It need not have been divided. And we must hold all those people responsible for India's partition, for having created this tragedy. Some responsible for malign reasons, and some responsible because they could not control it. And I would say
that those who demanded a separate nation in the name of Islam, in the name of two-nation theory, by saying that Hindus and Muslims are two separate nations, Muslim League, they are primarily responsible after the main culprit, the main villain, the British. There is a chapter in this book that is 1971 war. We have seen, friends, how this nation created in the name of Islam in 1947 was itself partitioned later in 1971, and in as bloody way as happened in 1947. So the big lesson is that nations cannot be founded, cannot be established in the name of any religion, especially in societies that are multi-religious, such as India is. And what is a matter of extreme concern for all of us is that once again we are witnessing, in the name of Jai Shree Ram, an attempt to create or convert this nation into a Hindu nation, a Hindu Rashtra. So this is repeating the mistake of Pakistan, creating a Hindu Pakistan, and the consequences will be as tragic as was witnessed in 1947 and as was witnessed in 1971. So Jai Shri Ram and Hey Ram, we must understand the fundamental difference. Hey Ram was an expression of unity. Gandhiji was dying. He had been shot. But the last two words that he uttered, Hey Ram. Hey Ram were words of unity. Jai Shri Ram have become words of division. And when I say unity, it's not just social unity, not just national unity, but spiritual unity, which is the highest form of unity. As we all know, for Gandhiji, Ram, Rahim were one. The bhajan that was sung at his all religion prayers every evening, Ishwar Allah Tero Naam, Sabko Sanmati De Bhagwan. He made no distinction between Ishwar and Allah, and he sought Sanmati for every human being. So, for Gandhiji, Hey Ram was an expression of the highest form of unity, that is spiritual unity. God is one, and therefore all creation of God, all human beings, they are one human family, irrespective of their religious, caste, or whatever other identity. Now, what is happening in the name of Jai Shri Ram? We know this. अभी राम नवमी के, इस साल के राम नवमी में जो स्लोगन थे और जो हमने देखा, मस्जिद के सामने जाकर हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, और मस्जिद में घुसे भी and they unfurled the saffron flag and they are not punished. Friends, I am a Ram Bhakt, I must confess. I every night before sleeping, I take the name of Ram because my mother has taught me that you must take the name of Ram before sleeping. Every Ram Navami we celebrate
But that Ram Navami and that celebration is very different. It brings people together. We have never seen, except this year and in the previous years, we have never seen that Ram Navami has become an occasion for anti-Muslim campaign. ये पहले कभी नहीं होता था. If there is a historical wrong, now there may be difference of opinion on whether there was a temple earlier or not, whether a temple was demolished and a mosque built. There may be differences, and there are people who say that yes, in the medieval period, Muslim invaders, they did attack Hindu temples, they demolished Hindu temples, and there is also evidence for it. If the Taliban could demolish the Bamiyan Buddha in the age of global television, it is quite plausible that such things happened in the medieval period. But if there is a historical wrong, those wrongs cannot be righted by committing yet another wrong. And that's what we are witnessing today. So the lesson that we have to learn is we have to follow the footsteps of Mahatma Gandhi and do our very best to rebuild the bonds of unity and harmony amongst all faiths, especially Hindus and Muslims. Without this, India will not remain united friends. Those who are indulging in communal politics today, they are very short-sighted. They don't know the consequences of this in the years to come. But people like Kolse Patil ji, they are 80 years old. They have seen a lot of history. So it's our duty to warn the people, especially young people. Don't be short-sighted. Learn from history. And we must prevent a catastrophe from happening, the kind of catastrophe that took place in 1947. So this is the first chapter. But Anand Vardhan ji, you have really covered such a vast expanse in your book. Now let me come to the second chapter, which again is a landmark in the history of independent India. We the people, India embraces the Constitution, 26 January 1950. Now, I'm not going to delve too much into constitution making. Our constitution is one of the most enlightened constitutions in world history. And our constitution is a direct product of our freedom movement. ये जो अभी मिर्ज़ा साहब बता रहे थे कि 1947 सब जगह खून खराबा, इतनी नफरत, और यहाँ एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट आता है, देश का विभाजन हो चुका है, ऐसे समय में एक डॉक्यूमेंट आता है जो कहता है कि all citizens are equal, all have equal rights. What an enlightened document. How did this come about? ये तो अचानक नहीं हुआ है, because the ideals of the constitution, they were already there embedded in our freedom movement led by Mahatma Gandhi. We must understand this. Now there is only one point on which I have a slight difference, if you allow me. जिसका जिक्र कोलसे पाटिल जी ने भी किया, Mahatma Gandhi is called the father of the nation and Ambedkar is called the father of the constitution. Now I was very quickly browsing through this chapter. This widespread belief that Ambedkar is the father of the constitution, it needs to be put to scrutiny. Not many people know, and even those who know
they don't talk much about it, that none other than Ambedkar himself in 1953 in the Rajya Sabha said that people say that I have written this constitution. I have not written this constitution. I was just a hack. The word he uses is hack. I was just a hack. I was told to do by others what to do, and I have done it. But if given a chance, I will be the first to burn this down. These are the words of Ambedkar. I'll be the first to burn this down because it does not serve anybody. आप राज्यसभा के रिकॉर्ड देख सकते हैं. These are exactly Ambedkar's words. Now, if he was the architect of the constitution, if he was the father of the constitution, one cannot expect such a person to use these words. तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये आपने इसमें बिल्कुल सही कहा है कि अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाने में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनाने में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था, यह आपने जिक्र किया है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और फैक्चुअल डिबेट की ज़रूरत है. नो डाउट दैट अंबेडकर वॉज अ great social reformer and a great constitutional expert, because of which, even though he was not a member of the Congress, he was a bitter critic of the Congress, he was a bitter critic of Gandhiji. Nevertheless, Gandhiji said that he is an expert in law, in constitution. So therefore, let us make him the chairman of the drafting committee. I now come to the next chapter, that Hindi Chini Bhai Bhai. The war, defeat, India's defeat and Nehru's death, 20th October 1962. I've just again very quickly glanced through this chapter, but friends, this subject has once again become extremely relevant and timely in view of what is happening right now in Taiwan. बहुत सारे लोग मीडिया में, टेलीविजन चैनल पे ये पूछ रहे हैं कि why are we saying one China? We should question this one China policy because China is our enemy. I'm sure that all of you have been reading this or watching this on television. I have my own views. There is no comparison between the border dispute between India, China, and the issue that has erupted in Taiwan. Taiwan has always been a part of China. It was occupied by Japan between 1895 and 1945. But when Japan was defeated in the Second World War, it surrendered Taiwan back to China, and the United Nations very clearly, explicitly says that there is only one China, and the sole legitimate representative of China is the People's Republic of China, and Taiwan is a part of it. Taiwan is a province of it. This is what the United Nations says, and this resolution of the United Nations has been supported by India. India has never questioned. India has not recognized Taiwan as a separate independent nation. So India has taken a principled stand. Of course, there is a problem that we have with China, and that problem has been dealt by you in this chapter, the 1962 war. Very unfortunate, and if one thing that really hastened Pandit Nehruji's death, it was the defeat, India's defeat in the war.
Now, what do? We are in 2022. We have a problem with our neighbor, and the problem has worsened in the wake of what happened at Galwan Valley 2 years ago. Friends, there is no military solution to this. This has to be solved politically through negotiations and through mutual compromise. Neither China can defeat India, unlike 1962, nor India can defeat China. And any war between our two countries will be disastrous for both our countries, and therefore we have to find a solution that is good for both of us, and we have to create an atmosphere in both countries where the people accept a mutual compromise. So this is my understanding of whatever you've written in this particular chapter. Now I come to chapter 5, India trumps Pakistan, 1971 war, birth of Bangladesh and emergence of Durga, Indira Gandhi. I have already commented on the very bloody birth of Bangladesh in 1971, because it was an artificial, Pakistan was an artificial nation, the way it was born in 1947. There is no example anywhere in the world of a country that has two parts and the two are separated by 1300 kilometers, one a western part and another eastern part, with India in between. Totally artificial. So East Pakistan was destined to become separate, and that's what happened. Unfortunately, it happened in a very violent way. The Pakistani army crushed the liberation movement of Bangladesh in a very, very brutal manner. Lakhs of people were killed. And that again is a lesson for us, that our subcontinent, Indian subcontinent, at one time it was undivided. Today it is three separate nations. The RSS says अखंड भारत कभी होने वाला नहीं है. Neither Pakistan will want to join India, and India cannot wage a war and get Pakistan into India, or even Bangladesh will not agree to be part of India. But what is necessary is that our three nations, which were once part of a single nation, we should come together as a confederation, in the same way that the European countries have come together as a European Union. So today is we are in the 75th year of India's independence. Before we celebrate the centenary in 25 years, let us all campaign for peace in South Asia, for complete normalization of relations between India and Pakistan, for bringing India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Myanmar, all these countries in South Asia as a South Asian Union. So, now lastly, I come to your last chapter, which is Jai Shree Ram, Ram Temple, yes, but whose Ram Rajya? For Mahatma Gandhi, Ram was not just a temple. In fact, I'm yet to come across any photograph of Mahatma Gandhi where he visits a temple. महात्मा गांधी कभी मंदिर गए ही नहीं, और बड़े भक्त थे, राम भक्त थे, लेकिन किसी भी मंदिर नहीं गए, क्योंकि उनका कहना था कण कण में राम, मन मन में राम. राम तो सब जगह है. तो ये जो आज हुआ है, इसको पूर्ण विराम देना पड़ेगा. And therefore, I would like to refer to your last lines in your book. The recent incidents of our land brought cheers to a substantial section of our society.
but only time will tell if this path leads us to become a Vishwa Guru. यानी जिस रास्ते पे ये चले हैं, क्या इससे विश्व गुरु बनेगा या विश्व फैलेगा? I can only wish the nation moves from Jai Shree Ram. These are Anand Vardhan's words. I can only wish the nation moves from Jai Shree Ram, which is being used like a war cry these days, to Jai Siya Ram, the sound of peace and tranquility for all. Thank you very much. Jai Hind, Jai Jagat. Thank you so much, sir. I would now like to request author of the book, Anand Vardhan Ji, to share his views. नमस्ते रिस्पेक्टेड जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, सईद मिर्ज़ा साहब और कुलकर्णी साहब एंड ऑल द डियर फ्रेंड्स हु आर प्रेजेंट हियर। मैं बेसिकली दो तीन चीज़ों को कहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज जस्टिस कोलसे पाटिल सेड कि वाई जस्टिस कोलसे पाटिल। जस्टिस साहब, टू बी ऑनेस्ट, लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। लोग नाम सुनते हैं हे राम टू जय श्री राम, किसी के पेट में दर्द हो जाता है, किसी के घर में बीमारी आ जाती है, किसी के कोई दिक्कत हो जाती है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल थ्री ऑफ यू कि आपने ये नाम सुनने के बाद भी आप आए, क्योंकि बहुत से, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी को मैं छोटे करने की बात नहीं है, ये दुख की बात है इस देश में कि बहुत से ऐसे लोग जिनको मुझे लगा था कि उनको इसमें आने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो कह नहीं रहे कि हम आ रहे हैं। और ये जब बात मैं आपसे कह रहा हूँ तो देयर इज अ बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ विच आई एम टेलिंग, विच आई विल कम। मैं एक तो दर्शकों को बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। मैं शायद 20, 25, 30 मिनट में अपनी बात समेटने की कोशिश करूँगा। अगर आप कहेंगे तो उससे कम में भी कर सकता हूँ। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। इतना प्रबुद्ध हमारे पास लोग हैं, उन लोग कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन ज़रूर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई दिस बुक? वाई दिस बुक इज़, क्योंकि ये बहुत से लोगों के मन में आएगा कि ये आप क्यों लिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बुक इज द इंडियन पॉलिटिकल इवेंट्स जैसा मैंने समझा। इट इज द वे आई हैव अंडरस्टूड। आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड इट, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। मैंने इन इवेंट्स को इस तरह से समझा है और मैंने अपनी बात आपके साथ शेयर की है। एंड इसीलिए एट टाइम्स जब जिस कोलसे पाटिल हमसे कह रहे थे कि आपने वो नहीं लिखा, या मैं जजमेंटल होने की मैंने जहाँ तक कोशिश की है, मैं जजमेंटल नहीं हुआ हूँ। मैं अपने शोज में बहुत जजमेंटल हूँ। आई हैव अ वेरी फर्म कन्विक्शन ऑफ सर्टन थिंग्स एंड विच आई एक्सप्रेस इट ऑल्सो, बट नॉट इन द बुक, बिकॉज बुक को मैंने दस्तावेज के रूप में किया है कि दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच आई फील दैट, मतलब मेरा जो रीडर है वो 20 से 40 साल का वो यंगस्टर है, जिसने इस देश की जद्दोजहद में आज की तारीख में वो किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, या किसी गाँव तो नहीं बोलूँगा, अंग्रेजी में लिखा गया है तो ये झूठी बात होगी, अभी तो अंग्रेजी की किताब है, लेकिन जब हिंदी में आएगी, वो नवयुवक है जिसने देखा तो है लेकिन समझा बहुत सी चीज़ें नहीं है। उसको ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि गांधी को आज हम लोग एक दूसरे नज़र से देखते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। ये सही बात है जो कुलकर्णी साहब ने कही, इट इज़ करेक्ट दैट व्हाट अम्बेडकर साहब के बारे में, लेकिन मैंने बहुत सी चीज़ें लाके अपना जजमेंट नहीं किया। आई हैव लेफ्ट इट देयर एंड आई हैव आस्क्ड द रीडर टू डिसाइड एंड टू रीड इट फर्दर, बिकॉज ये जो एक चैप्टर है ना, अगर आप उस एक चैप्टर में पढ़ना शुरू करेंगे तो देयर विल बी 10 अदर बुक्स व्हिच यू हैव टू रेफर। इट इज नॉट जस्ट अ चैप्टर। मैंने उसको समेटने की कोशिश की। दूसरी एक बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट था, और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि वाई इन इंग्लिश, दैट वाज इम्पोर्टेंट।
वाई इन इंग्लिश का मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बताता चलूँ कि ईमानदारी ये है कि टाइपिंग इज ईजियर इन इंग्लिश, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। इट इज़ वेरी इजी टू टाइप इन इंग्लिश, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टाइप इन हिंदी। तो मेरा जो पहला और प्राइमरी रीज़न था कि जब मुझे लिखना था तो वो टाइप इन इंग्लिश हो गया था। दूसरा रीज़न जो मुझे जैसा लगता है कि आई गेट अ वाइडर ऑडियंस ज्योग्राफिकली। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जिस परिवेश से आता हूँ, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट इसलिए बताऊंगा कि मेरे बच्चे, मेरी लड़की वहाँ है और मेरा वो नाती रो रहा है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा झेलना होगा क्योंकि वो मेरा नाती नहीं तो अगर वो किसी और का नाती होता तो मैं ही यहाँ से सबसे पहले कहता कि भाई जरा मैं अपना मुंह बनाने लगता, लेकिन मैं मुंह भी नहीं बना सकता हूँ, तो वो मेरा नाती है। नो विद दिस बैकग्राउंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरे ये दोनों बच्चे दिल्ली में डीपीएस में पढ़ते थे और हम मतलब हमारे घर में हिंदी बोली जाती है, वी आर प्राइमरली हिंदी स्पीकिंग पीपल। नो जब भी वहाँ जाते थे तो मेरी जो टीचर रहती थी उनकी एक शिकायत होती थी, वीक इन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। तो भाई हम लोग तो ऊपर छत बोलते थे, वो सीलिंग बोलते थे, कुछ अजीब बातें थी, तो वो हरदम कहते कि नहीं आप घर में अंग्रेजी बोलिए। नो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आई सेड नो भाई आई कैनॉट, मैं अपने घर में अपने बच्चों से 1-2 घंटा जो रहता हूँ, मैं अंग्रेजी, मुझे आर्टिफिशियल नहीं कहूँगा पर दूसरे की भाषा लगती है, अंग्रेजी मेरी भाषा नहीं है। लेकिन जब काम पे गया, और फिर सही बात यह है कि जिसको कोई और कहता है, मेरे वर्ड्स नहीं है, कि जो पेट की जो भाषा है जिसने मेरे घर का किचन चलाया वो अंग्रेजी है। तो शायद अंग्रेजी का एक ये भी था, वाइडर ऑडियंस मैंने बता दिया। वाई 20 इवेंट्स, किसी ने मुझसे ये भी कहा कि 20 इवेंट क्यों? नहीं 30 भी हो सकते थे, 21 भी हो सकते थे, 20 मुझे ऐसा लगा कि मैं जब इसको 75 साल को समेटने की कोशिश कर रहा था तो कहीं तो रुकना था। इट कैन बी 20, इट कैन बी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 है तो शायद 21 होना चाहिए था, फिर लोग कहते 21 क्यों, फिर मेरी बीवी की 22 है तो 22 होना चाहिए था, तो वो एक समस्या होती। तो इसलिए somehow I left it at 20। और मुझे ऐसा लगा कि मुझसे कुछ चीज़ें छूटी हैं। मुझे जब मैं कहीं और भी इसकी बात कर रहा था तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा आपने वो नहीं किया, आपने मंडल को इसमें, मैंने मंडल को इसमें बहुत मतलब एक सरसरे तौर पे उसको एक पेज में समेट लिया हूँ। एक पेज में मैं पोस्ट मंडल का क्या इफेक्ट पड़ा, इंडियन पॉलिटिक्स को मंडल ने कितना इफेक्ट किया है, जो आज बैकवर्ड पॉलिटिक्स है, उस पर मैंने नहीं किया है। और मुझे एक जगह का और अफसोस है जो मुझसे छूट गया है, विच इज ऑनेस्टली, अगर आगे कभी इसका कुछ बाद में आया, मैंने गोवा आंदोलन को नहीं छुआ। आई हैव नॉट टच्ड ऑन द गोवा आंदोलन, विच इज वन ऑफ द, एज अ एवरेज इंडियन वी डोंट फील दैट, हम लोग गोवा को मौज मस्ती की जगह जानते हैं, लेकिन जितना गोवा ने इस देश में सफ़र किया है एज अ गोवन, वो शायद हम उनके कष्ट को नहीं जानते हैं। और मुझे ये लगता है कि वो मेरे साथ थोड़ी मुझसे चूक हो गई है। दैट इज समथिंग विच आई स्लिप्ड। बट अगर आगे कभी इसका नया एडिशन आया या कुछ आया तो ज़रूर उसको करेंगे। अब मैं एक बात पे आता हूँ जिस पे मैं आ रहा था, वाई दिस नेम हे राम टू जय श्री राम। मुझसे ज़्यादा आप लोगों ने कहा, आप लोग मुझसे, दे आर मोर क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दिस एंड दे हैव टोल्ड इट मच बेटर देन व्हाट आई कैन। पर ये नाम, शायद जब मैं किताब लिखना शुरू कर रहा था उससे पहले नाम कहीं ना कहीं दिमाग में आ चुका था, और बहुत जगह नहीं बताते थे। हम लोगों को इतना नहीं था कि ये लगता था कि कोई और चुरा लेगा, कि ये नाम कहीं बताना नहीं। तो लेकिन उस नाम की वजह से दिक्कत ये हुई कि मेरे 3, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो उचित नहीं है, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में तो नाम ले लेता हूँ लेकिन पब्लिक उस पर नहीं। 3 हिंदुस्तान के बड़े पब्लिशर्स ने मेरी किताब 4-4, 6-6, 8-8 महीना रखे। मेरी किताब 1.5 साल लेट आई, और फिर बाद में एक ने तो साफ साफ कहा कि इसका टाइटल चेंज कर दीजिए। तो हमने नहीं, टाइटल नहीं चेंज करेंगे। उन्होंने नहीं, ऐसा है ना कि आप कुछ और कर दीजिए, वो 20 डेज पे चेंज दी कोर्स। हमने नहीं, टाइटल नहीं चेंज करेंगे, एंड आई हैड टू विड्रू। और उसकी वजह से उनकी बहुत सख्त वो था। खैर दैट इज अनदर हिस्ट्री। एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई पब्लिशर, जिसके पास जब मैं अनामिका के पास गए, ये मूल रूप से हिंदी के पब्लिशर हैं, इन्होंने 80% इन्होंने हिंदी की किताबें छापी हैं, किसी नॉन रेफरेंस से गए। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं टाइटल नहीं चेंज करूंगा, मैं अंदर का कंटेंट नहीं चेंज करूंगा।
अब अगर इसके साथ आप छाप सकते हैं तो अब मेरी दिक्कत ये हो गई है जो जस्टिस साहब ने इस बात को किया कि इसको पढ़ लेते हैं अगर ठीक से तो कांग्रेसी भी गुस्सा है। कांग्रेसी इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसमें कुछ इंसिडेंट मैं इमरजेंसी के देता हूं और संजय गांधी का वो इंसिडेंट भी कह देता हूं जब वो इंदिरा गांधी को थप्पड़ मारते हैं। इसमें जो प्रेजेंट रिजीम है वो भी गुस्सा है क्योंकि इसमें एक चैप्टर है कि हु किल्ड सोहराबुद्दीन। इसमें जो लास्ट चैप्टर है राम टेम्पल का, उसमें मैं प्रश्न उठाता हूं कि भाई आपने एक 15 लोगों का वो बनाया, न्यास बनाया, कमिटी, एंड देयर इज नो वुमेन इन दैट। तो मैं वो प्रश्न उठाता हूँ। मैं ये भी प्रश्न उठाता हूँ क्योंकि मैं ईस्टर्न यूपी से आता हूँ कि चौमासा जो अभी चल रहा है उसमें कोई इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। मैं ये भी प्रश्न उठाता हूँ कि अगर जो हिंदू मर्यादा है, जैसे कुलकर्णी साहब ने कहा मैं हिंदू हूँ और मैं रोज की पूजा करने वाला हिंदू हूँ, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं इसको कई बार जो मेरे पुराने दोस्त हैं, लेकिन मेरा ये जो रक्षा है ये किसी मुसलमान ने अम्बेडकर नगर या आजमगढ़ ने बनाया है। मेरे जो भगवान है जिन पे मैं जल चढ़ाता हूँ वो किसी मुसलमान ने तराशा होगा, क्या करूँ? तो मैं इस रेफरेंस पे इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये दोनों तरफ से, जैसे होता है ना कि ना घर का ना घाट का, आगे का नहीं बोलूंगा, लेकिन ना घर का रहा ना घाट का, लेकिन उसका एक फायदा ये हुआ कि लोगों को कम से कम जो